Taeyang and I'm back after a long time. I'm sorry guys for making a vlog after so many days. I know it has been 5 or 6 months, right? Next time I won't repeat this again, okay? Anyways, so you know what's the reason behind? Let me tell you. The first reason is these days I'm having my online classes. Sounds fake, but okay. It's not like I'm not having my online classes. Ow, that hurts. I am having my online class, पर इसके वजह से मैं vlog नहीं बना रही, ऐसे नहीं है, ठीक है? I have enough time to make vlogs, like in Sunday, second Saturday और festivals लोग में holiday मिलते रहता है, लेकिन it's me, ना? I don't know what's wrong with me, but I'm very lethargic these days. Yes. And the second reason, which is also the main reason, and that is I go nowhere nowadays. आज मैं सीखूंगी कि चिकन कैसा बनाया जाता है. मतलब आई थिंक बीफ जैसा ही होगा शायद. नहीं, बीफ जैसा नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा, बहुत ही ज़्यादा अलग होगा. आई हैव बटरफ्लाइज नाउ. आई एम काइंड ऑफ नर्वस. ओके, सो लेट्स किक ऑफ गाइस. आई एम हियर इन द किचन. तो अभी मैं लहसुन ये सब गार्लिक के साथ मतलब काटने वाली हूँ. गार्लिक लहसुन में क्या फ़र्क है? तो मतलब मैं गार्लिक छीलूँगी, उसके बाद फिर अनियन, मिर्चा, ये सब, ठीक है, और मतलब अदरक भी. So let's get going. So guys, I'm done with the ginger and garlic paste and it's right over here. और हमने अनियन और मिर्चा भी काट लिया साथ साथ. And you know, फिर से मतलब मेरा वीडियो में कुछ ना कुछ ट्विस्ट आते ही रहता है, राइट? तो आज प्लेन चेंज. ओके, या द प्लेन चेंज गाइस. क्या है कि मतलब chicken was not available in the market. I mean, I have no idea about the market, but जहाँ से हम लोग लेते हैं वहाँ पर नहीं था चिकन. So मटन गाइस, मैंने प्याज डाल दिया है. And after that, I added garlic paste. And now stir it well until it turns brown. And after that मैंने 1 चम्मच cumin seeds डाल दिया है. And again I'm stirring it. उसके बाद I added some red chilies. And मैंने मीट भी डाल दिया. आप लोग बाद में भी डाल सकते हैं, ठीक है? और अभी मैं टर्मरिक पाउडर डालने जा रही हूँ, जो कि है हल्दी. और मैंने इसे 1 चम्मच आधा डाल दिया है, मतलब 1 आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर डाल दिया है. उसके बाद अगेन I'm gonna mix it well. देख सकते हैं मेरा ये मिक्स हो गया है. और ये मिक्स हो जाने के बाद मैं डालने वाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर. और मैं इस मिर्च पाउडर को 2 चम्मच डालने वाली हूँ. वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है? आप लोगों को जितना डालना है आप लोग डाल सकते हैं. और उसके बाद मैं डालने वाली हूँ धनिया पाउडर, जो कि 1 चम्मच मैंने डाला है. और अभी मैं डालने वाली हूँ होल मिर्च पाउडर, जो कि है ब्लैक पेपर पाउडर. और उसे भी मैंने 1 चम्मच डाला है. मतलब अभी मैं डालने जा रही हूँ, और जैसे कि मैंने डाल दिया. और अभी मैं डालने वाली हूँ मीट मसाला. चम्मच ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है. तो हाँ, जैसे कि मैंने मीट मसाला डाला है 2 चम्मच. आप लोग देखकर डालो, ठीक है, कितना डालना है आप लोगों को. Again, I'm mixing it. और अभी मैं नमक डाली हूँ. मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया. एक्चुअली मैं आगे भूल गई थी. एंड अगेन आई एम मिक्सिंग इट. और जैसे कि मेरा मिक्स हो गया है,
तो मैं इसे पकने के लिए ढक्कन डाल कर रख रही हूँ। तो गाइस हमारा मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स डाल दिया हम लोग ने। अभी सिर्फ हमें टमाटर डालना है और वो थोड़ी देर के बाद डालेंगे, मतलब अभी भी डाल सकते हैं, अभी डालेंगे जैसे ये। सो यहाँ है हमारा टमाटर और अभी हम इसे स्लाइस करेंगे, ठीक है। सो गाइस हमने टमाटर स्लाइस कर दिया है और अभी डालना है। अभी तो हो गया है, अभी टमाटर भी डाल दिया और फिर हमने चावल भी बिठा दिया। अभी हमें सिर्फ इंतज़ार करना है। और हाँ, उससे पहले मैं रोटी बनाऊंगी, ठीक है। आप लोग देखना चाहोगे? ओके, सो आई एम काइंड ऑफ प्रो, ओके, I've mastered it, I think. Anyways, आटा डालूंगी मैं यहाँ से लगी। Anyways, इतना ही, मतलब थोड़ा सा ही, ये आंटी के लिए, हम लोग आंटी बोलते, ठीक है। सो अभी आई नीड सम वाटर, हाफ ग्लास ऑफ वाटर। Here it is, and अभी I'm gonna make it, and अभी मैं इसे डो बनाऊंगी, ठीक है। Okay, I think this one is enough. So guys, as you can see, I'm kneading the dough. It's done. मैं इसे थोड़ा 3 या 4 मिनट के लिए रख दूंगी, ठीक है। अभी रोटी को तो हमने ऐसे रख लिया है और मैं अभी दाल बना रही हूँ। इनका क्या ना? क्या? ये एक्चुअली मेरे को पता नहीं था तेल का, क्योंकि वहाँ का तेल खत्म हो गया ना, इसलिए। एंड नाउ आई एम एडिंग मीठा तेल। ओके, मीठा तेल डाल रही हूँ। ₹200 दे और ₹50 काट ओवर एक्टिंग की वजह से। ऐसे मूवमेंट ना बहुत ही स्कैरी होता है, पता है। मैं तो बहुत डरती हूँ ऐसे सब, कि अचानक तेल लग जाता है, बहुत दर्द देते हैं ना, इसलिए। ओके, अनियन की बारी। ये तो और भी डरावना है। ओ भाई, अभी मैंने ऐसे ही, मतलब लास्ट में मैं तड़का नहीं करती हूँ, ठीक है। खुद का एक ही स्टाइल होता है ना, मतलब खुद का अपना स्टाइल होता है। सो मैं पहले ही तड़का कर देती हूँ। थोड़ा डरावना है ना फर्स्ट पार्ट। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। नमक गिराने वाला था। अभी कुछ नहीं हो रहा, कि मैंने नमक भी ऐड कर दिया ना, इसलिए। मैंने एक्चुअली गार्लिक भी नहीं डाला, ऐसे कुछ नहीं।
और दाल यहाँ है, आगे ही धो लिया था मैंने दाल को। अभी पूरा मैं बंद नहीं करूँगी, अभी थोड़ा ऐसे ही रखूँगी और जब उबल जाएगा ना तभी मतलब मैं क्लोज करूँगी। So guys, I've washed my hands and now I'm making the balls. Woo! अच्छा है ना? मैं पहले बना दूँगी पूरा। सीटी हुई है 2 आई थिंक, यस। प्लीज मैं ऑफ कर दिया आदम। I like the dimples on your corner. अभी मैं यहाँ पर पेपर डालूंगी। एक्चुअली टिश्यू पेपर खत्म हो गया है, here you see. Okay guys, so I'm puffing up the chapati or roti, anything. Oh, फूला है ना? वैसे this is normal for me. Okay. Okay, this one is also good, but what? Oh, okay, fine. What happened? Oh, okay, so this one is also good, right? Okay, so as you can see, I flipped the roti. Okay, so the last one is also done. तीनों अच्छा हुआ. I appreciate it. Okay, so again, I'm puffing up the roti and still, oh भाई फूला देखा. Second वाला भी, it's good. यहाँ पर you are, and the last one. The last thing जो काम रह गया वो है खाने
video here. Okay, so I'm done. कैसा लगा आपको? A1 थैंक यू पॉप्स आपा आपा कैसे लगा हाँ अच्छा है So guys, it's my turn to taste it. Oh भाई इतना अच्छा मतलब it's good. मैंने पूरा खाया भी नहीं. So guys, that's it for today. I hope you liked it, and if you liked it, then don't forget to give a thumbs up. And yeah, guys, मैंने आपको first में बोला था कि I'll try not to repeat this again, but अभी I don't think like अभी मतलब मैं 2-3 महीने के बाद फिर से मैं वीडियो डालूंगी मतलब जल्दी नहीं डाल पाऊंगी मैं so yeah but I'll try my best okay it's because अभी ये मंडे को हम लोगों का वो खुल रहा है स्कूल खुल रहा है और स्कूल is opening on 13th Sep so yeah I don't think it would be possible for me to make another vlog मतलब जल्दी नहीं बना मतलब मैं बना पाऊंगी लेकिन जल्दी नहीं बना पाऊंगी yeah so guys if you liked it don't forget to give a thumbs up मैंने पहले भी बोला था and please subscribe to my channel as well as do comment down below so